he bounced! Hey everyone, ChaatNChat is back. My name is Josh. My name is Miguel. And we're watching Gabbar is back. And this is part 3. So if you haven't watched part 1 or part 2, then you can go check them out. I put the link to them in the description below this video. और अगर अब तक नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक बटन पर थप्पड़ मारो। गब्बर अब तक कई बार वार कर चुका है सर, लेकिन पुलिस ने अब तक कुछ भी नहीं किया। देखिए, हम में से किसी को भी पैनिक होने या डरने की जरूरत नहीं है, और स्पेशली एक ऐसे मुजरिम से जो छुप कर वार करता है। We have everything under control. It's like, you taunting me? अभी खबर है कि पुणे के एसीपी सुशील शिंदे को गब्बर ने उठा लिया है। ऐसे कितने गब्बर आए और चले गए? सर क्या है? सर गब्बर तो खुद पुलिस वालों को किडनैप कर रहा है सर। आपकी सेफ्टी के लिए आपको तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाने के ऑर्डर्स मिले हमें। सर, They're all laughing at That's funny. I love that everyone started laughing at him. एजी बोलती का बंद डाली रहे? आप टॉप 10 लिस्ट में हो। सर, बस यही के एसीपी मोरे साहब की भी लग गई। शिट! सर, नागपुर, तावड़े has been kidnapped. अब तक 7 विकेट गिर चुके हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है यहाँ। सर, क्या वो बॉलिंग करेगा और आप बैटिंग? Idiot! He's like, I'm just hungry. I need a samosa. With red sauce! सबसे करप्ट पुलिस वाला कौन है यहाँ? No one wants I to know admit everybody that. knows. It's him. बताओ! गावरे सर। कौन? चंद्रकांत गावरे। गब्बर का अगला टारगेट तुम हो सकते हो। Be alert. मैं चंद्रकांत गावरे हूँ सर। मुझे मारने के लिए यमराज को खुद नीचे आना पड़ेगा। Does that not look suspicious? Like, why a group of people walking towards him like that? Rang his bell. अलर्ट ऑल चेक पोस्ट। हर जगह नाका लगाओ। एवरी स्टेशन। एक भी गाड़ी बच के नहीं जानी चाहिए। हर गाड़ी की तलाशी लो, हर आदमी की तलाशी लो। He's in the back. दादाजी है सर। हेलो। हाँ क्या हो रहा है यहाँ? चेक कर रहे हैं सर। चेक हो रहा है मतलब अभी तक चेक नहीं किया? कर रहा हूँ सर। तुला माहिती है ना आपल्या डिपार्टमेंटच्या माणसाला किडनॅप केले हो सकता है इसके took अंदर भी हो his सकता है khaki. क्या इसके अंदर? दादाजी। दादाजी तो फिर रोने का क्यों? हो गया ना टाइम जाने का उनका। क्या यार तुम लोग ऐसा इमोशनल बनते हो? क्या रे कितना टाइम हुआ मरे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को? हाँ ए तुम चलो ए बघा इकडे बघा जाऊन आणि मला 10 मिनिटांनी रिपोर्ट करा। Oh no! Don't spoil it for him. But she's gonna be asking questions when he gets home. Yeah. किसको भगा रहा तूने? चंद्रकांत गावरे हूँ मैं। पुलिस ऑफिसर चंद्रकांत गावरे। छोड़े आकर बचिया। बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। She followed him? Okay, do you think she's gonna be on his side? I don't Or know, this is against gonna him? be a hard call because she's just seen what she's seen and she doesn't know the full story. Well, she knows that Gabbar is out there, so now she might actually know that he's Gabbar now. मेरे हाथों मर के तेरा पूरा डिपार्टमेंट साफ होने वाला है। तेरे लिए ये गर्व की बात है, मेरे लिए इतना काफी है। Oh shit. तुमने एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया है। What the hell are you doing? Kidnapping, murder. क्या कर रहे हो तुम आदि? कौन हो तुम? गब्बर। गब्बर? तुम? Yeah, girl. They just ditched him on the road? No. it's When he hit him with the axe, like he didn't make sure he was dead first? And how fortunate is that it's a medical bus? जिन्होंने जिंदगी बचाई सोचा नई वाली उन्हीं के नाम कर दूं क्योंकि यूथ का हिसाब क्लियर है। अच्छा लगे तो वेलकम, बुरा लगे तो भीड़ कम। इन सबसे बात करके ये समझ आया हिम्मत है तो पावर नहीं है, पावर है तो हिम्मत नहीं है, और अगर दोनों हैं तो करप्शन है। चक्र भी हो गया है सारा सिस्टम। करप्शन एंटी डिप्रेशन की तरह धीरे धीरे एडिक्शन बनता जा रहा है और फिर स्लो डेथ। He recruited from his school. हमारी टीम तैयार हो गई। सिर्फ एक ही मकसद था, गब्बर का इतना खौफ डालना है कि ये सरकारी अफसर रिश्वत तो क्या अपनी तनख्वाह लेते हुए भी डरे। पूरे मोतियों को इकट्ठा करने के लिए जो धागा चाहिए था वो धागा मैं हूँ, गब्बर। आज महीनाबाद फेसबुक, ट्विटर, न्यूज चैनल्स पर देखो सबसे बड़ा विलन आज सबसे बड़ा हीरो बन गया।
गब्बर इज ट्रेंडिंग नंबर 1 Trending. और सभी के मुंह पर एक ही सवाल है सर, कौन है ये गब्बर? Isn't that great news? क्या हुआ भाई? This is good news. किसी का कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? इस बार जो करप्ट पुलिस ऑफिसर की लिस्ट बनी थी उसमें सबसे पहला नाम तुम्हारे Oh. पिताजी का था। Does he have to kill his own dad? क्या करना चाहिए? क्या करना है सर? तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके भी बच्चे थे ना सर? ट्विटर या फेसबुक नहीं, तुम्हें देखकर आज यकीन हो गया कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है। जब अपनों की गलतियों के खिलाफ उसके अपने खड़े होना शुरू करते हैं तो गब्बर जैसों को खड़ा होना नहीं पड़ता। मुझे बस यही सोच लानी थी और मैं ये सोच ला चुका हूँ। गब्बर गब्बर गब्बर, चारों तरफ बस यही नाम है। रात को सोने जाता हूं तो उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ मुझे ही नींद नहीं आती है, कोई और भी ऐसा यहाँ? Anyone? Don't do it. You made that mistake before. सर हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ म्यान है, तलवार नहीं। ये चुप बैठ। इग्नोर हिम सर, ये अपना लोकल जेम्स बॉन्ड है। इसे लगता है ये गब्बर तक पहुंच गया है, बस अब पकड़ ही लेगा। So you will never be able to catch गब्बर now. ए फिरंगी चुप कर, वरना डिसमिस कर दूंगा। अबे जाना, क्या डिसमिस? भाड़ में गई नौकरी। मुझे भी ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना जहां तुम जैसे एरोगेंट ऑफिसर्स घूमते हो। ये साधो, क्या साधु? सर इनको लगता है गब्बर चाय समोसे की तरह इनकी टेबल पे आ जाएगा। गब्बर कोई मामूली किडनैपर नहीं है सर, वो एक मिशन पर है। वो खुद एक मिशन है। तुम एक कांस्टेबल हो, कांस्टेबल। Go eat your samosa and shut up. By the way, you have red sauce on your lip. और क्या जानते हो उसके बारे में? सर ये देखिए, नांदेड़ तालुका के ऑफिसर्स की लिस्ट। Oh. He's showing all the seniors how to actually do their job. Yeah. 90% केस तो तुमने सॉल्व कर दिया है, लेकिन तुमने किसी को बताया क्यों नहीं अब तक? सर मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। And he's looking at all the idiots around him. Yep. ना तो पुलिस इस गेट के अंदर आ सकती है और ना ही गुंडे। ये हमारे नेशनल कॉलेज का रूल है सर। हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जो बाहर है उनको तो अंदर कर सकते हैं ना। लिस्ट निकालो अपनी, अरेस्ट करो सबको। Wow, just arrest them because they have a connection to this college? I guess. Pretty far-fetched. But I guess, I mean, you can arrest Well, but- anyone and hold them up to Yeah, what, 28, but, 48 hours or the something? issue we've seen is the whole abuse that happens with the police. That's is true. People who are innocent get swept in, and you know. गब्बर के डर से अब पाटिल के सारे प्रोजेक्ट्स इलीगल लग रहे हैं। पूरी रियल एस्टेट लॉबी परेशान है, आप लोगों की वजह से। गब्बर ने अपनी बात मनवाने के लिए 10 करप्ट ऑफिसर्स को उठाया, मैंने 10 ईमानदार ऑफिसर्स को उठा लिया। तुम में से सबसे बड़ा ईमानदार ऑफिसर कौन है? ईमानदारी का मेडल चाहिए? हाँ? Yeah, I was like, I would not have gotten that close to the edge. If I was one of the honorable people there, maybe you run rush him into and just throw him off the edge. Yep. So, Kick him right on his backside. रिश्वत ली तो गब्बर मार देगा, ना ली तो? अरे वाह ऑफिसर्स, अब तो काम करवाने के लिए पैसे देने की जरूरत ही नहीं, डर का डोज ही काफी है। ये लोग सुबह से कुत्तों की तरह मार खा रहे हैं और Yep, एक शब्द see? नहीं निकल रहा है किसी के मुंह से। Yep. किसी के पास कोई आइडिया है कैसे पकड़े इस गब्बर को? समय है सर, गब्बर को पकड़ने के लिए गब्बर की तरह सोचना पड़ेगा। बैठो। यादव जी किसको? और मोटू समोसा लेकर आओ। Yeah. रेड सॉस मत बोलना। Yeah. And a chai, please. अगर मैं गब्बर की जगह होता तो जरूर दिग्विजय पाटिल के पीछे भागता। क्यों? 2 दिन पहले सागर पंडित नाम के एक ऑनेस्ट ऑफिसर को उसने मारा है सर, क्योंकि उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया था। दिग्विजय पाटिल भी यही चाहता है कि लोगों में उसका डर बना रहे, लेकिन गब्बर उसे सजा जरूर देगा सर। बुरे लोगों को
खत्म करने निकली तो बुराई 4 कदम और आगे निकल गई। सागर was one of the most honest officers in his department, sir. हमें सिर्फ पाटिल पर नजर रखनी है। गब्बर अपने आप हाथ में आ जाएगा। सर, दिग्विजय पाटिल का शेड्यूल मिल गया है सर। कल उसका बर्थडे है। इतना आसान नहीं है पाटिल को पकड़ना सर। Kill him on his birthday. It'll be his death day and his birthday. Yeah. MPs, MLAs, बिजनेसमैन और भी बहुत जाने माने लोग होंगे, लेकिन हमें इंतजार रहेगा सिर्फ एक इंसान, गब्बर। And you guys don't even know what he looks like, so. उस हॉस्पिटल वाले आदित्य का पता चल चुका है। आपका बर्थडे केक कटने से पहले उसका सर काट के लाता हूँ आपके लिए। Oh. You think? प्लीज उसे जिंदा लेके आना। मैं उसे खुद मारूंगा, दोबारा मारूंगा। Or maybe this time he won't let you survive because he had him like out the Yep, window. he showed compassion and He won't be doing that mistake again. nope. Oh, making a deal with the devil. Yeah. I think they got Outnumbered? yeah. Just a little. Oh, he's What? he's trying to hide himself. Wearing masks of him? Yeah. And dressing like him. I wonder if all of those people wearing the masks are from that college. Yeah, very possibly. Because they had a big number. Wait a second, he's like, "What?" The wink. Okay, sir. Copy. Nah, dude, he just lures you away. Lured his staff away from him and जब तक सूरज चांद रहेगा, पाटिल तेरा नाम नहीं रहेगा। yep, they're stealing him. Well, it takes a couple to, and Yeah. they're all running and they're all looking so similar. They're like, who's who? And Yeah, that's a pretty good strategy. Shame on us. हमारी आंखों के सामने से उठा के लेके चला गया। He's a smart man. I am the counsel representing the arrested government officer. So? We have permission मेरे client से मिलने के लिए, और उनके रिश्तेदार भी मेरे साथ हैं। सर मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए। Can we go see them now? Wow. They were there this whole time? आपके पति को गब्बर ने मारा है मैम। He killed your husband, his father. इसको बताइए कि हमें बता दे कि वो कहाँ छुप सकता है, कौन-कौन से ठिकाने हैं उसके। अगर तुमने इन्हें कुछ भी बताया तो समझ लेना तुम्हारी माँ भी मर गई। Ooh, things were not nice at the household. Who is this Gabbar? Why is a criminal getting so much affection? क्योंकि कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। Police needs to arrest the corrupt government officials and then the courts need to punish them. अगर कानून से कुछ नहीं हो रहा है तो किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना? तुम्हें लगता है जो गब्बर कर रहा है वो कानूनन सही है? सोसाइटी क्रिमिनल्स के कुछ करने से बर्बाद नहीं होती। सोसाइटी तबाह होती है एक केपेबल आदमी के कुछ ना करने से। गब्बर is a good man. Oh no, she's putting her Too foot much, yeah. forward to, yeah. तुम जानते हो इस गब्बर को? मैं उस वजह को जानती हूँ जिससे एक आम आदमी गब्बर बना है। but he probably planned this with her, I think. I am Digvijay Patil. I am a bloody brand. ब्रांड करता रहता है तो हमेशा। Bloody brand. तुझसे बड़ा ब्रांड हूँ मैं। तू? हाँ मैं। That's true. Everyone knows Gabbar. 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। तू गब्बर? हाँ। गब्बर। Just getting that now. 5 साल पहले तूने मुझे 2 चांस दिए थे। आज मैं तुझे 3 चांस देता हूँ। जिसको फोन करना है कर और उनको बता कि तू क्या है। तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि तू सबसे बड़ा ब्रांड है या मैं। मैं दिग्विजय पाटिल। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ अकमरे। गब्बर ने मुझे किडनैप कर लिया है। अरे यार तुम क्यों मरवा रहे हो मुझे? कहीं गब्बर को पता चला तो अपने तो 12 के भाव लग जाएंगे।
मैंने तुम्हें होम मिनिस्टर बनाया, मुझे मेरे ही घर में पकड़ रखा है, मेरी जान खतरे में है। हेलो हेलो, Oh, there's one. कमिश्नर्स ऑफिस, मैं दिग्विजय पाटिल बोल रहा हूँ। गब्बर ने मुझे मेरे ही घर में छुपा रखा है। क्या ये पुलिस स्टेशन है? नहीं, ये पुलिस स्टेशन है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये पुलिस स्टेशन है ना? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ये पुलिस स्टेशन है, पिज्जा स्टेशन नहीं है यार। सर किसी पागल आदमी का फोन है, पुलिस स्टेशन फोन करके पिज्जा ऑर्डर कर रहा है। Wait, what? आखिरी बात सुन लो, ये पुलिस स्टेशन। Maybe he... I think he kind of maybe swung to the other side and is... मैं इन नामर्दों की वजह से दिग्विजय पाटिल नहीं बना। दिग्विजय पाटिल एक आदमी नहीं, एक ब्रांड है। Damn, this guy's got, like, moves for a dude that's overweight and a little older. Is he gonna bleed to death? That glass sheet there is gonna become a big point, I think. Right there. Yep. I used to... It's a weird one. Okay, that should do the trick. Some brain hemorrhaging or something. Maybe drowned in the pool. Whoa. Just deadlifted like, he's probably like 230. Oh, 40, 50. Oh, he bounced! Like a beach ball. Yeah. आपके जो सीबीआई ऑफिसर है उनका ऑफिस कहाँ? क्यों? मेरा उनसे काम था। कुलदीप साहब किसी को नहीं मिला You think he's gonna turn himself in? क्या कहूँ? प्रधानमंत्री जी आए हैं गब्बर के बारे में पूछने। कहो गब्बर खुद आए उनसे बात करने के लिए। कुलदीप पावा। प्रोफेसर आदित्य फ्रॉम नेशनल कॉलेज। गब्बर अपने आप को सरेंडर करने आया हूँ सर। मैंने लातूर में एक तहसीलदार, एक कलेक्टर को नासिक में, एक पुलिस ऑफिसर को मुंबई में और ऐसे कई करप्ट ऑफिसर्स को मारा है और अभी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को मार के आ रहा हूँ। मैं इन सब मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जितने भी मर्डर्स हुए हैं मैंने सोच समझ के किए और अपने होशो हवास में किए। वो सब ईमानदार ऑफिसर्स और स्टूडेंट्स जिनको आपने गिरफ्तार किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन्हें छोड़ दीजिए। And he's gonna go to prison for life, right? Well, let's see how the public have been. Yeah, but I mean, he killed, which is killing even if they did something wrong. You can't, like, vigilantism isn't legal. Yeah, but the thing is that the law wasn't doing what it was supposed to be doing. And Yeah, but they wouldn't have gotten the death penalty if they were convicted. yeah, but if they were convicted, the system just allows them to, okay, you got a slap on the hand, and now you're going to go back to what you were doing already. Wow. ऐसे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे वहां। ये तुम्हारे अलावा किसी की नहीं सुनेंगे आदित्य। Can you help me out here? What are you gonna say to him? Like, go home, don't listen to what I said? No, I would say, look, I have to be held accountable, just like these people that were doing bad. I need to be held accountable for what I've done. And what I'm asking you all is to follow through with, what I exposed, and make sure you hold those accountable. मैंने आज तक किसी गलत आदमी को माफ नहीं किया, फिर अपने लिए कैसे माफी मांग सकता हूँ? Right. मुझे गर्व है स्टूडेंट पावर पर। तुम लोग जानते हो, हर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनता, लेकिन हर गवर्नमेंट ऑफिसर स्टूडेंट जरूर होता है। जोशियों को हाथ दिखाना छोड़ो, करप्ट लोगों के कान के नीचे हाथ लगाओ और बोलो बस। हर जगह कंधा उठा देते हो। शिवाजी महाराज ने कोई चैट ग्रुप नहीं शुरू किया था, अकेले निकल पड़े थे और सब जुट गए थे उनके साथ। तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें अपने देश को किस मोड़ पे लेके जाना है।
Because you are the future of India. मैंने खुद अपनी मौत लिखने के बाद इन लोगों को मारना शुरू किया. What is that about? I don't know. एक बेईमान की आंखें बंद करो तो बाकी सारे बेईमानों की आंखें अपने आप खुल जाती हैं. और अब पता है मुझे क्यों मरना होगा? क्योंकि गब्बर ने गलत किया. मैंने जो किया वो सही है, पर जो रास्ता चुना वो गलत है. Because I didn't have a choice. So they give him the death penalty? आप जानते हो गब्बर कौन है? हर वो आदमी जो गलत देखकर आंखें नहीं फेरता, वो गब्बर. जो घूस देने वाले को घुस-घुस के मारे, वो गब्बर. Wow, respect. अगर मैं नेशनल कॉलेज का होता तो आज आपके साथ होता. साधुराम, तुम जिस जगह पर हो उस जगह में रह के भी बहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हो. Yep. He's in a position to do it too. एक गूगल फैक्ट बताऊं? One kiss burns many calories. Want to lose some weight before I. आज के बाद अगर कोई रिश्वत लेने की सोचेगा तो उसके दिल के अंदर से आवाज आएगी, रिश्वत मत लेना वरना. Wow. Like Middle Ages, dude. And they hang him? No, like, is that the lethal is that the injection or anything? Punishment in India? I guess. And the executioner doesn't wear a shirt? It's like medieval times, man. तेरा क्या होगा कालिया? This is one of those complex kinds of moral dilemmas. Yeah. And I like how he took ownership for what he had done. You know, told them not to do the same, but the philosophy of Gabbar, you know, don't allow corruption to become the norm and injustice to become the norm. So how many Pani Puri out of 10 would you rate it? So I am actually going to give this a 9. Oh, wow. The theme is, I think, the thing that really drives it home for me. Having now seen a bunch of movies where we talk about this or witness this corruption and how it gets people in these really weird, life-altering and sometimes just gut-wrenching situations. I think this is good timing for this one, and that's why I'm going to give it a 9. I like how there were people that thought he was a little crazy, but even they began to see kind of the wisdom of what he was saying. And again, yeah, he had to kill some people to get the visibility and to get the attention. He basically ended up becoming a martyr. Yeah, definitely. For the cause. He's a martyr. He's a martyr. Sometimes if the situation is so entrenched, someone has to be the martyr, someone has to do the unthinkable in order for change to start happening and come about and for people to become aware. Yeah, I'm 9. Okay. All right. I'm going to rate it an 8 Pani Puri because, yeah, I agree with what you're saying. I like the complicated nature of it and the complicated characters that aren't 100% good. I mean, we've seen movies in the past that have been gray areas when it comes to some of the characters. And those are the characters that I love the most. Like the movies that I love the most is because it's a lot more realistic instead of somebody being so virtuous that they literally can't do anything wrong. Right. That is why I really don't like the Superman comics because he is way too good and there's no one's like that. Yeah. So for him to have this complicated past and to go about his own way of doing things, even though he said what I did was right, but how I did it was wrong, killing them was right, but how I did it was wrong, is that? I think you reverse it. The killing was the wrong part. The right part was the philosophy, realizing what the actual corruption was. Because it was more than just government officials. It was powerful individuals. Anyone with power, anyone in a position of strength. But the problem is to make the real change. I mean, you have to inspire the next generation, and that's what he was showing. And he showed all these young people in the college and all that sort of stuff, inspiring them because that's how you're going to make the change. Right. Else, if you just went about murdering people and then
went quietly into the night, it wouldn't have made as big of an impact, I think. And then people would just, and maybe a couple years later, start being like, hey, you're gonna offer me like a crore? Like, that's some good money, man. Like, I'll take it. I mean, even now, I don't know. But you were even beginning to see some of the older folks or generations, the mom and her son. They were For her own husband. Yeah, they were getting it as well too. You got to rely on the next generations, but I think that there were some people already in existing generations that were also beginning to say, yeah, this is unsustainable. And that's a thing that I don't think was pressured enough, is that corruption like that ends up morphing and is so hard to sustain. And particularly when you have all the way around. I mean, you have a hospital that has its own form of corruption. You have this developer that has his own corruption. You have all these government officials. You have the police, and all of these things become so hard to sustain that at a certain point, it starts to collapse on itself, and then you end up with total chaos for everybody. Okay, both those that are in the corruption system, but then also those that are subject to it in the first place. So apart from whether or not it was morally correct or whatever the story, I thought the acting was really good too. Akshay Kumar was really good for this role. He just played it so well, and even in that flashback, it's like he plays some complicated characters really well. The music was good, not overdone. In some movies, I think music can just be overdone when it's supposed to be some sort of like movie like this that's action, that's inspiring and all that. And then if you do like some weird random number, it kind of takes you out of it. But I think they did a really good job. They integrated them really well. The dance at the party. And the flashback that drew on the emotions. And Kareena Kapoor didn't even have a line in this movie. She didn't say, but she said. No, she didn't say it. She mouthed it. She mouthed it. So, you know, and that just shows how powerful she is, because she can get like all these emotions across and this entire story without even saying a word. So that was pretty good. That was good. Yeah. So I think overall the edit was really solid. It didn't feel like it was too long. There weren't any parts that I felt like, oh, this is dragging. Come on, keep going. So it was like constant moving. The pacing of the movie I thought was really good too. But you guys let us know what you thought in the comments, and what rating would you give it? If you guys haven't already, please consider hitting that subscribe button, the bell icon, our like button par thappad maro.